guys, welcome back to my channel. First of all of you the happiest and the safe Diwali. त्योहार का खूब मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए. ओके, टुडे वी आर स्टार्ट विद द सब डिविजन्स ऑफ पैथोलॉजी. लास्ट टाइम हमने देखा था कि हिस्टोपैथोलॉजी की डेफिनेशन. अब देखो, मेनली पैथोलॉजी का अगर मैं कॉमन निकालूँ ना तो टिश्यूज़ की स्टडी है, कहीं ना कहीं केमिकल की भी स्टडी है. हर एक जगह ये पैथोलॉजी वर्क कर रहा है. किस तरह? लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट इज सर्जिकल पैथोलॉजी. जब भी किसी को कैंसर हो या बायोप्सी हो तो उसको बायोप्सी कराते हैं. बायोप्सी में क्या होता है कि आपकी बॉडी से सेल निकाला जाता है, फिर उसके टिश्यूज़ को स्टडी की जाती है कि क्या चेंज है. और टिश्यूज़ में देखा जाता है कि नॉर्मल सेल की जो रेंज होती है उससे कैंसर के सेल की मात्रा बढ़ जाती है. तो टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं कि नॉर्मल सेल से सेल बढ़ गए हैं और स्ट्रक्चर भी सेल का डिफरेंस है. इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है. इसको बोलते हैं सर्जिकल पैथोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू विच आर रिमूव बाय अफेक्टेड टिश्यू. सेकेंड इज़ द फॉरेंसिक पैथोलॉजी. आप सभी ने एक बार तो क्राइम पेट्रोल CID देखा होता, तो जिसमें बताते कि डेड बॉडी का फॉरेंसिक रिपोर्ट करते हैं. तो ब्लड, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, एज क्या है, किस तरह से डेथ हुई, किस टाइम पे हुई, सब पता चल जाता है. पैथोलॉजी का इधर क्या रोल है? इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू विच रिमूव बाय डेड बॉडी. हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं जो डेड बॉडी से रिमूव है, तो इसलिए उसको बोलते हैं फॉरेंसिक पैथोलॉजी. साइटोपैथोलॉजी. द मेन मीनिंग ऑफ साइटो मीन्स सेल. इट इज़ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी which remove by the lesion of body. Main meaning of the lesion of body means any kind of the injury or any harmful. If any person has injury, then the fine needle are injected and then studied. It is known as cell study pathology. केमिकल मीन्स आपको ब्लड ग्रुप जानना हो तो यू हैव टू नो द व्हाट काइंड ऑफ द केमिकल इन द ब्लड. इफ़ देयर वाज द यूरिन इन्फेक्शन देन द व्हाट काइंड ऑफ द केमिकल चेंज इन द यूरिन. दैट्स नोन एज द केमिकल पैथोलॉजी. फिफ्थ वन इज़ द इम्यूनोलॉजिकल पैथोलॉजी. इसमें क्या होता है? वेन एवर एनी पर्सन आर सफ़र फ्रॉम द एबनॉर्मल, इट इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. एबनॉर्मलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम मीन्स whenever any person from the repetitive disease. That's why that pathologist use the immunological technique. They analyze the antigen, protein, intracellular membrane, mitochondria, glycosis. This is known as immunological pathology, which are the studies of abnormality of the hematologic pathology. There was the difference between histology and hematology. Histo means the tissues study and heme means the blood. It includes the disease of blood. In the several kind of the cases, there was the RBC's repetitive increase, RBC's repetitive decrease. The blood becomes excessive thick or excessive thin. It includes all kind of the disease of blood. It includes the clinical examinations also. Seventh is the experimental pathology. It is also known as the investigative pathology because mainly it is used for the research and the scientific study of the disease process through the microscopic examinations of organ, tissue, cell, body, fluid. This experimental pathology is mainly used by the PhD pathologists who are a particular research in particular topic. Is the geographic pathology. It is the study of pathology of animal, human, plant in relation to geographic factor. For example, if we examine the village and the city, what are the village geographic factor and this factor how affect the pathologies of body, and what are the cities geographic factor and how it affect the human, animal and their pathology. It is the geographic pathology, study of pathology of the animal, human and plant in relation to geographic factor. In city there was also subdivisions. In the north zone, east zone, this kind of the subdivisions also.
Then the ninth is the medical genetics pathology. It helps in the clinical diagnosis, monitor, and infection therapies. So genetics means through genes it's pass out. It is the study of genes. Through the genes, disease pass one body to another body. Means diabetes. If the parents have diabetes, then their children might suffer from the diabetes. So some of the diseases are genetics. So it is the study of genes through pass out from one body to another body. 10th is the molecular pathology. It is the study of molecule. Molecule means what are the tissues have molecule, what are the organs have molecule. So it is the study of molecules in organ, tissue, and bodily tissue. So I have one short formula for you, and remember C square M square HESFI. He SFI and C square M square and he is SFI. ऐसा रख सकते हैं. So C square means the cytopathology, which are the studies of pathology which remove by the lesion of body. Another C is the chemical pathology. It is the study of chemical in blood, urine, and other. M square means the medical genetics pathology, which is the help in the clinical diagnosis, monitor, and infection therapy, जिसमें वो help करता है. There is a medical genetics pathology. It is the study of genes, which mainly it is used for the genetic disease like the diabetes, and which are the pass from one body to another body. Then another M is the molecular pathology. It is the study of molecule in organ, tissue, and other. Then he SFI. He H means the hematopathology. Hematopathology means it is the study of disease of blood. It is also used in the clinical examination. E means experimental pathology. It is also known as the investigative pathology. It is the mainly scientific study of disease which are processed through the microscopic examination of body, organ, tissue, and fluid. So it is also known as investigative because of it is used in the research purpose, and we use the microscope and we scientifically studies of this disease. As what do you mean by that? As surgical pathology. It is the study of tissue which removed by affected tissue. There was a difference between the surgical pathology and site. जब आपको इंजरी होती है और उसी इंजरी को निकाल के टिश्यू को एग्जामिन करे उसको बोलते हैं साइटो. लेकिन सर्जिकल उस इंजरी की आपने जो भी इंजरी हुई थी उसकी आपने सर्जरी करवा ली और सर्जरी करने के बाद आपकी जो टिश्यूज़ होती है उसको एग्जामिन करता है. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू विच रिमूव बाय अफेक्टेड टिश्यू. एफ फॉरेंसिक पैथोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू which removed by dead body. And I means immunology pathology. It is the study of abnormality of immune system of the body. Abnormality of immune system में mainly antigen देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन की मिटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन क्या है. whenever any person suffer from disease WBC काउंट बढ़ जाते हैं. सेकेंड, उसकी जो बॉडी में मिटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या बढ़ जाती है बिकॉज देयर बॉडी नीड्स टू एनर्जी टू किल दैट वायरस, दैट इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ. So this is the immune pathology. So this is the 10 type of the subdivisions of pathology. Thank you so much for watching.